T20. Indian spinners leaving their mark as Clinical India complete a 65 runs win over New Zealand to take 1-0 lead in the 3-game T20I series. Now, with the first game having been washed out, India cannot be defeated in this series. Hello and welcome to Hero of the Match. I'm Megha and joining me in studio is Jaya Sharma, former Indian cricketer, and senior sports journalist Rakesh Rao. Welcome to the show. Thank you so much. Indian spinners picking up wickets in the middle overs. Sounds like music to our ears. Yes, of course. I mean, I think the Indian pacers set the tone for that to happen. And after that, Yuzvendra Chahal, Deepak Hooda, they bowled very well in tandem. So it happens when at one end a bowler creates pressure, the other one gets the wicket. So I think that's what happened with Deepak Hooda there. And in fact, Deepak Hooda also got the 19th over, wherein he was on a hat-trick ball, but eventually landed up with 3 wickets, in total 4 wickets to his name. You know what? See, I've often said, that these wickets will go into the, like stats. Yeah. And you'll always talk about these 4 wickets. But if you actually look at his first wicket, that was the important one. The other 3, they were just giving the slog. The team had already lost it. Yeah. But then the stats will never show it. But give credit to him because so far he's been included into the team purely as a batsman, which is not really on. You have to give him a chance to bowl. Because if you remember, we were talking about having individuals in the playing 11 who can bat and bowl a bit. So, Hooda actually was taken as an all-rounder. Yeah. But we didn't really see him, he is one of those guys who should bowl more. So at least it'll do him a world of good. In fact, a very pertinent point. We've been talking about the need for all-rounders in the Indian team. Now with Hooda getting that 19th over, picking up those wickets, great for his confidence. Yes, sure. I mean, that is what is important for a player to get the opportunity and perform. And that's exactly what Hooda did there. And in fact, then with Washington Sundar as well, was whacked for 17 runs of his very first over. But then made a comeback and picked up a wicket of his very first ball in the next over. What had really happened was right from the first over. I mean, in fact, from the very second, ball itself. Once India got that early wicket, the pressure was always there. And Williamson's approach didn't help matters. That actually helped the Indians to gain that confidence that, okay, they are behind the asking rate all the way. So one could always try a little harder. So people who were hit early on, they were, they also struggled. But once they realized that, okay, we are in a very safe zone. I think that confidence makes a lot of difference. And Sundar gained from that. Later on, Chahal. Yeah. He knew that, okay, I can afford to. Yeah, particularly. he got hit for a 6. Yeah. And then he immediately removed his man. So, all these things happen only because you put enough on the board and the opposition is not striking the way it is expected to. In case of Yuzvendra Chahal, of course, the first wicket was very important. He was, of course, taken for a cleaner, taken for a 6. But then the next ball, we heard Rishabh Pant telling him to slow it down in that very over. And he did exactly that, got a wicket. Yeah, definitely. I mean, wicketkeeper is the best person to judge what is happening around the field. So I think he gave a brilliant piece of advice to Chahal, and the execution part was fantastic from Yuzvendra Chahal, where he just lowered down the pace of the ball. And actually he bowled really well. The slots, the corridor he bowled in was very amazing. In fact, बहुत important wicket था वो ग्लेन फिलिप्स का, जिन्होंने बहुत रन्स बनाए T20 विश्व कप में भी. सुंदर के पहले विकेट का हम जिक्र कर रहे थे. डेवॉन कॉनवे को आउट किया. हमने देखा है डेवॉन कॉनवे जब स्वीप शॉट खेलते हैं तो बहुत सारे रन्स एकत्रित करते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, लेकिन यही शॉट इवेंचुअली उनका विकेट भी दिलाता है. बिकॉज अभी आपको ये मालूम है कि वो ये स्वीप अभी आ ही रहा है. अगर वो उस बॉल को नीचे नहीं रख पाते हैं, तो अगर आपने डीप स्क्वायर लेग पे एक फील्डर तैनात किया हुआ है जो मूव भी हो सकता है, तो उसमें आपको वो चांस हमेशा रहता है. क्योंकि बॉल अगर तेज़ ट्रैवल कर रही है तो वही बॉल शायद आपके हाथ में ना भी आए, बिकॉज बॉल बहुत तेज़ आती है वहाँ पे. और जो शॉट वो जिस ताकत से वो गेंद को हिट करते हैं वो हम सब ने देखा है कि बिकॉज ही इज़ अ वेरी हार्ड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. टाइमिंग उनकी उतनी नहीं है
पावर है जी, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। लेकिन आज तो जैसा इंडियंस ने चाहा ऑलमोस्ट वही हुआ है, और जो हवा में जितने भी कैचेस आए सब पकड़े गए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि जब आप कैच ड्रॉप नहीं कर रहे हैं और जो कैचेस हवा में आ रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हैं, तो ऑपोजिशन को कोई रेस्पाइट नहीं है इसमें। तो ये चीज़ भी धीरे धीरे बिल्ड होती गई। लेकिन इन सब का मैं एक चीज़ के लिए जो एक फैक्टर है सबसे बड़ा, वो है केन विलियमसन की धीमी बल्लेबाजी। जब तक वो वहाँ खड़े रहे, इंडिया ने उनको आउट करने की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं, कभी भी महसूस नहीं हुई। जो 47 बॉल पे 49 पे अगर खेल रहे हों, उसके बाद वो चौके मारें, छक्के मारें, तब तक मैच खत्म हो चुका है। Absolutely. तो ये एक रीज़न है कि केन विलियमसन के ऊपर ये हमने पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा, एक्सेप्ट 150 ऑफ हिज, उनके ऊपर वो सवालिया जो एक निशान था वो हमेशा तब भी रहा। आज भी हमने वही देखा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जी, केन विलियमसन के फॉर्म पर जया की भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन आपने मेंशन किया कि किस तरह से भारतीय टीम ने आज सारे मौके लपके। हम भी ये जो मौका है अपने श्रोताओं के साथ जुड़ने का, उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 011-2342-1084 और इसके अलावा 2342-1085 के द्वारा भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी जो पहले कॉलर आए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आदाब मैडम। आदाब जी, मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मेरा नाम नईम मलिक है मैडम जी। जी मलिक जी, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले ऑल द इंडिया को हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आज सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही बढ़िया खेला है। और मेरा सवाल ये है कि मुझे बताइए, पिछली बार हमने ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा है, फेल हो चुका है। आज भी वो जब आए खेलने के लिए टेस्ट मैच खेल रहा था, क्या हमारे पास विकेट की भी कमी थी? है संजू सैमसन भी बाहर थे, उनको कम से कम खिलाए, इतने मौके दिए आप लोगों ने, इतने मौके मिल चुके हैं ऋषभ पंत को। वो फ्लॉप हो चुका है क्योंकि इतने बड़ी देश में वो खेल रहा है। कम से कम लोगों को भी सोचना चाहिए ना, उन लोगों को सोचना चाहिए ना, हम इतने बड़े देश में खेल रहा है, हमें लोगों का भी सोचना चाहिए। जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं पूसद जिला यवतमाल से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ मैडम। जी अरुण जी, क्या सवाल है आपका या क्या टिप्पणी है आपकी? मेरा सवाल था मैडम, ये अपन इतने साल से अभी खेल रहे हैं, अपने को अभी और ओपनर नहीं मिले। और दूसरा सवाल था, ये जो बी टीम अपन बोल रहे हैं वो बहुत बढ़िया खेल रही है। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना बहुत मुश्किल काम है सर। जी धन्यवाद। कर रही है टीम ये। जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सबसे पहले, क्योंकि ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनके अराउंड चर्चा तो होती ही है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसी भी हो। एक बार फिर से ऋषभ पंत का जो मोड ऑफ डिसमिसल है वो भी काफ़ी सिमिलर लगा। टीमें लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप उन्हें खिलाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स लेग साइड स्ट्रॉन्ग है। आज भी कुछ ऐसा ही होता हुआ। जी डेफिनेटली, आई मीन जो उनकी वीकनेस है वो काफ़ी पर्टिनेंट दिखी वहाँ पे। और डेफिनेटली न्यूजीलैंड एक प्लान के साथ गया था उनके अगेंस्ट, बट मैं सरप्राइज्ड हूँ अभी भी कि वाई ही हैड टू ओपन। क्योंकि आप एक ओपनर का स्लॉट दे रहे हैं एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को, किस लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एंड यू हैव स्पेशलिस्ट ओपनर्स, यू हैव पीपल सिटिंग आउटसाइड ऑन द बेंच। सो आई थिंक जो एक सवाल पूछा गया कि संजू सैमसन को क्यों नहीं देखा जा रहा, तो आई थिंक एक वाजिब सवाल है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि थिंक टैंक जो है वो इसके बारे में जल्दी कुछ सोचना चाहिए। Interestingly, Sanju Samson too has opened in the IPL and is pretty familiar with that position. Now there are 3 Indian wicketkeeper batters that probably we are considering going ahead. All 3 of them have age on their side and they all can open. But yeah, your stance on who is leading at the moment as far as you are concerned? You mean to say as a wicketkeeper or as a opener? As the player to cement his position in the 11. Well, see, so far, let's take them one by one. Ishan, left-hander, that gives them an edge. Yeah. And Indian selectors always felt that, one could invest in him. But not as long as Rohit and Rahul were there. They were undoubtedly the first choice openers. So Ishan, yes. Sanju Samson, now his credibility has taken a beating in the sense that the selectors, if you sit down with them and you talk to them privately, they'll share with you that, look, we've given him so many options. They'll show you statistics. Yeah. And that is not incorrect. He has failed. He has failed the fate of the selectors. Selectors have been very, very consistent with him. He hasn't really, gone big when they really expected him to. Now that leaves you with, say, like Rishabh. As I said, when Rishabh gets going, it's a beauty to watch. Yeah. But when he gets out, then you say, oh my God, why him? And that is exactly what we've been hearing. When he gets out and leaves, people are disappointed. The first thought that comes to their mind is, why him? And when he's not in the side and someone else gets out, then he'll say,
we should have had Rishabh Pant. So this will carry on and on and on. So, this debate, let's just leave it for like some other day. But the fact of the matter is, yes, sending a wicketkeeper or a non-opener to open the innings at the cost of a specialist opening guy, I'm not in that favor at all. इनफैक्ट जो डिस्क्रिप्शन अभी भी राकेश ने दिया वो प्रॉब्ली संजू सैमसन को भी फिट करता है, क्योंकि जब वो स्ट्रोक मेकिंग करते हैं कितने दिलचस्प पारियां वो खेलते हैं, लेकिन जैसे वो आउट होते हैं तो देन वन इज लेफ्ट माइंड बॉगलिंग. आई मीन ही इज so much potential, he's tremendously talented, but again consistency is one thing that has not happened in his case. That is, I think, it's a factor that we have to take in, that आपके पास अगर टैलेंट है और फॉर्म नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. और जिस तरीके से आप रन बनाते हैं वो बहुत मैटर करता है टीम के लिए. तो आई गेस अगर आप उनको उनकी स्पेशलिस्ट पोजीशन पे नहीं खिलाएंगे तो ऐसे डिसमिसल्स तो देखने को मिलेंगे आपको. एक कॉलर का जो सवाल था वो ये था कि बी टीम, कोट अनकोट बी टीम जो गई है उसने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन बल्लेबाजी में अगर सूर्य कुमार यादव की पारी हटा दें तो बहुत ज़्यादा विश्व कप में जो हो रहा था उससे डिफरेंस नहीं दिख रहा. बिल्कुल सही कहा आपने. देखिए, अगर आपका एक बैट्समैन आपको 51 बॉल में 111 रन देता है, दैट मीन्स 191 के टोटल में बाकी पूरी टीम ने जो है 69 बॉल में सिर्फ 80 रन बनाए हैं. अब 69 बॉल में 80 रन तो कोई बहुत अच्छा रन रेट नहीं है. तो अभी ये पूरे मैच में जहाँ पे 65 रन से एक टीम जीती है, उनके वो 51 बॉल 111 रन बिल्कुल अलग उभर के दिख रहे हैं. बाकी किसी के रन नहीं है पूरे इसमें. अगर आप देखें विलियमसन की भी जो 50 है वो भी स्ट्रगल की हुई है. और उसके अलावा किसी के मुझे ऐसे कोई बड़े रन नहीं दिख रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, मतलब फुल मैच में सो फार. द पॉइंट इज कि आप क्रेडिट दीजिए स्काई को, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की है, अपने ही स्टाइल से बैटिंग की है. अगर कोई लॉकी फर्ग्यूसन को जो 140-145 की एवरेज गेंद डाल रहे हैं, उनको अगर जिस आसानी से ऑलमोस्ट विद कंटेम्प्ट, एक होता है कि आप बहुत ही प्यार से खेल रहे हैं किसी को, यहाँ तो आप डिसमिसिव हैं. तो ये जो है ये आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा कि एक क्वालिटी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट उनके कंट्री में जाके आप इस आसानी से खेल रहे हैं, वो भी जब आप 90s में हैं. तो यू रीच योर 100 इन द मिडल ऑफ अ हैट्रिक ऑफ फोर्स एंड a 6 at the top of it. I mean, amazing hitting. I mean, this happens only when you are in a zone and you are getting things right. So, but when you put that in the context of the full match, he stands head and shoulders above the rest. So, give a lot of credit to him, because batsmen have by and large struggled here. And thankfully, he has been in that sort of zone for quite some time now. Now, there's an interesting record. He is about to overtake Mohammad Rizwan, because he, of course, scored a century today. Before the start of the game, he had scored around 280 runs, less than what was Mohammad Rizwan's record for most runs in T20Is in a calendar year. अभी जो हमारे साथ कॉलर आए उनसे बात करते हैं. नमस्कार. नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए. आपका रेगुलर श्रोता लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ. जी बिल्कुल, हमारे जहन में हम आपको रेगुलरली आपके सवाल लेते हैं और सुनते हैं. धन्यवाद जुड़ने के लिए एक बार फिर से. तो मेरा सवाल आज का यह है कि हमारी टीम तो डेफिनेटली अच्छी खेली, उसमें कोई डाउट नहीं. बदलाव किया वो भी अच्छा हो गया, लेकिन 39 रणजी की टीम होने के बावजूद भी अगर हम ऑलराउंडर के लिए स्ट्रगल करते हैं, कितनी दुख की बात है. तो इसके लिए बीसीसीआई इसके ऊपर क्यों प्रयास नहीं करती है? जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए. एक और सवाल हमारे साथ आ सकता है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले. नमस्कार. आदाब, मैं अब्दुल कयूम परे बीरो गोरीपुरा से बात कर रहा हूँ, कश्मीर से. जी आदाब अब्दुल जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है कि इमरान मलिक को खिलाना चाहिए भुवनेश्वर कुमार की जगह से, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जो अच्छा मैच हो रहे हैं उनमें बॉलिंग उनकी नहीं अच्छी होती है. जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए. ऑफ कोर्स दिस समथिंग सो एक्साइटिंग अबाउट रॉ पेस कि जब हम देखते हैं तो भारत में खास करके काफ़ी फैसिनेशन रहता है उसके अराउंड. उमरान मलिक इस सीज़न आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन भारत के लिए जो मौके मिले हैं एक्सपेंसिव रहे हैं. क्या करने की ज़रूरत है उन्हें अपने प्रदर्शन में कंसिस्टेंसी लाने के लिए. हालांकि आज जिसने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है उसे क्या अवार्ड मिलता है वो देखते हैं प्रेजेंटेशन से. Clearly head and shoulders above the rest in terms of trying to generate anything out there. So they were outstanding. We weren't quite up to the task today, but better for the hit out. I suppose if you look across the board, we're never able to wrestle momentum with the ball in terms of get a breakthrough or two, and then with the bat we couldn't quite get momentum either. It was frustrating, and
one of those things. But I suppose it keeps pointing back to Surya Kumar and the way he went out there and said it was something special. It felt hard for New Zealand tonight, just the conditions maybe, or is it just a case of probably trying a lot harder than you thought you might need to? Yeah, maybe a mix of all of the above. Obviously at the start, very tricky with quite a lot of swing, and those two at the top there for India are some of the best exponents. But to get through that and try and get some momentum, not be able to, was frustrating. We kept losing wickets, and it was not our best effort. T20 can go a little bit like that, but quick turnaround, and guys have been playing really good cricket over the last month. The games have been coming thick and fast, so important just to look at those small areas we can touch on and keep moving forward. It can be a bit of a goldfish game, T20 cricket. You've got to forget about it pretty quickly and move on to the next one. Only a couple of days now before we move to Napier. Better conditions expected in Napier in terms of temperature at least, and maybe a bit of sunshine around. What does the team have to work on the next couple of days just to put this performance to the side and to focus on the next? Yeah, I think you look at the small margins. A couple of overs either way, the game can swing a lot. But at the same time, you have to tip your cap to something special, which is an innings we saw today. That can happen. He's obviously the best T20 player in the world, and he certainly showed all of that today. We look forward to catching up with you in a couple of days' time, mate, so enjoy the trip down. Thanks, Katie. We're going to welcome in Indian skipper Hardik Pandya. Hardik, congratulations on the victory tonight. It was an all-round team effort. There was obviously a magnificent innings from our man Sky, but also your bowling unit did a job as well. Would you think of this as a complete performance tonight? Absolutely, it can't get any better than this. Everyone chipping in, but obviously it was a very special inning by Surya. He kind of put us in the game, I think 30 runs forward. We would have taken 170 and would have been quite happy with the total, but at the end of the day his brilliance kind of got us this total we got, and obviously then the bowlers came and they were very clinical. Everyone knew that eventually going forward, we as a unit have decided that we're going to be a little aggressive in terms of our mindset, and it being aggressive does not mean that you're going to take every ball wicket or try to take every ball wicket. It's just that how you show yourself, the body language, the mindset, it kind of changes. Even a good ball would be, you can be aggressive as well. So looking at all those things, I think we kind of ticked all the boxes, and especially with the kind of dew not dew, I think it was proper water because of the rain. It was quite difficult to bowl, but they stuck to their plans and kind of eventually got the result they wanted. Showed a lot of trust as well, and your six bowling option today with Hodder getting the option to bowl. So going into the match today, was it always your intention to bowl the six bowlers? Yeah, absolutely, because obviously I have bowled a lot of time. People know what exactly, and I myself know what I can do. But eventually, going forward, I want to look at number of more bowling opportunities who can bowl. It's not that always the bowler is going to have their day, but if I can kind of get one or two more batters to bowl and kind of get more confidence in the game time, it could have gone the other way as well. It could have gone on a different way where the result would have not been that. But eventually, today was one of the days where the sixth bowler can get that much confidence that Deepak kind of came and stopped the runs where they were getting some rhythm, but I think Deepak came and bowled absolutely fantastic, and kind of those 2 overs kind of changed the game and kind of put them under more pressure. We know it was an important tour, and this was an important start for this Indian side, an Indian side that is introducing some fresher faces to international T20 cricket. How do you feel as a captain after a performance like that, and what is your expectation now heading into the third and final game in Napier? I mean, there's no expectation. It's just that I expect them to be professional, which they are. Just going to give them the opportunity to kind of go there and enjoy the sport. Obviously, a lot of pressure is always there when you play for India, but at the same point of time, how I can create an environment where players are thriving in terms of their behavior, attitude. They should be happy. They should be happy around the bunch of guys, and then that's something which I see very often in this team, where people are getting happy on in their teammates' performance, and I think that's a very healthy sign going forward. And eventually, from the third game, nothing changes. A plan changes, and see, winning and losing will be always part of this sport. But at the end of the day, what kind of attitude you come with, that's more important for me as a captain. And I think today was fantastic, and people were backing each other. That's what I look for. And finally, I know it's early, but can we expect changes to your lineup for the third and final Sterling Reserve T20 International? I don't know. We will go. We'll see the wickets, and it's too short a time to kind of. I would love to give opportunity to every player is there in the squad, but it's just unfortunately the kind of games we are playing. It's just one game. So I think we'll ask the bowlers, we'll ask some of the players as well, if they feel like they want to rest, they'll rest. Otherwise,
I don't know, to be honest, but I'll see what happens when we reach on the ground. All right, well, enjoy tonight anyway. Congratulations on the victory, Hardik Pandya. Thank you. Cheers. Thank you so much. Interesting comments really from Hardik Pandya, and probably putting it forth, the team is consciously trying to groom all-rounders, as was evident in Deepak Huda's case. Now, एक और चीज़, क्योंकि स्पिनर्स का हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हार्दिक पांड्या ने बोला ड्यू नहीं, प्रॉपर वाटर था और लगातार टॉवल्स निकाल रहे थे, गेंद को पोंछने की कोशिश कर रहे थे. उसके बावजूद जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, योर क्लोजिंग कमेंट्स ऑन द स्पिनर्स परफॉर्मेंसेस. It was amazing. I mean, it was a fabulous performance from the whole bowling unit, especially from the spinners. And the way they bowled in tandem was absolutely cracker performance. Although we are not following chronology here, we are going back to the power play overs. Now, Bhuvneshwar Kumar in particular, the sort of movement he got up front, even the Kiwi pacers weren't able to extract that. India has toured overseas plenty of times this year. Bhuvneshwar Kumar has been phenomenal, at least in the power play overs. Yeah, that's what he did. I mean, first over 1 run, third over I think he gave 2 runs, and in the fifth over he gave just 9 runs. So if you're bowling out almost, I mean, I've always advocated this, that Bhuvi is not good enough when the ball gets a little old. Yeah. He should not have a second spell. He should bowl. If you see that he's got into his rhythm early, give him those 4 overs. By the 7th over, his quota should be over. Yeah. He should bowl all the odd numbered overs, and that's it. That's what we saw him do. Almost he did that. He would have been there for the 20th over, but the New Zealanders never gave him a chance to come back. So otherwise, I think the way he bowled well. And here, he bowled, a very organized line and length, this thing. I mean, his entire method, it looked so organized, disciplined, which you don't normally see him, because there is a tendency for him to stray down the leg side sometimes, and there he gets hit. Today I saw him keep the batsman busy around the off stump. He bought that ball in also, but then overall I still feel that he is good, but you can't use him in every condition. You have to see the condition and make use of him. He's not a man for all seasons. And in fact, probably India would have learned from the 219 overs that he bowled in the Asia Cup and what ensued after that in terms of results. But there was a question on Umran Malik, और उमरान मलिक को क्यों नहीं लिया 11 में. शायद जो एक शेष T20I है उसमें मौका मिले, लेकिन क्या कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ से कंसिस्टेंटली टीम में जगह बनाने के लिए? डेफिनेटली आपको टीम में हर एक प्लेयर का एक रोल होता है, तो आपको अपना रोल पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और जो टीम को आपसे उम्मीद है वो आपको डिलीवर करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट द इंडियन बॉलर्स आर डूइंग राइट नाउ. सो आई थिंक अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपने रोल को समझ के अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा. अब चर्चा थोड़ी न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से करते हैं. फिन एलन, जो पहला मैच उन्होंने खेला था विश्व कप का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो पारी खेली थी, उसकी बातें लगातार होती रहती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए उभरना बहुत मुश्किल हो गया वो नेट रन रेट के परफॉर्मेंस से. लेकिन कंसिस्टेंसी लानी होगी, क्योंकि जब रन्स बनाते हैं तो क्विक फायर बनाते हैं, बट रेगुलरली रन्स बनाने होंगे. बिल्कुल, ये चीज़ देखिए, ये सबके ऊपर ये बात जो है ये लागू होगी, क्योंकि अगर आप एक ओपनिंग बैट्समैन हैं, आप वो शीट एंकर का रोल आपका नहीं है. आपको जो एक डायरेक्टिव दिया गया है ड्रेसिंग रूम से, वो है गो एंड अटैक. चाहे आप पहली बॉल पे आउट हो जाएं, चाहे पहले ओवर में आउट हो जाएं, पहले 6 ओवर में आउट हो जाएं, लेकिन जब तक आप वहाँ हैं, अगर आपका दिन है उस दिन, तो आप वही हाल कर सकते हैं जो आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप के पहले मैच में किया. आप जिस दिन चल गए, आपकी टीम का जो टोटल है वो 200 रन पे ही दिखेगा फिर. लेकिन ये हर बार होता नहीं है, और ये सबको मालूम है. लेकिन आपने कहा कंसिस्टेंसी जैसे आज भी देखिए, आज उनका इंटेंट बिल्कुल ठीक था, उन्होंने देखा, लेकिन अगेन देखिए कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट हो जाती हैं. अगर वही बॉल बैट पे थोड़ा और मिडिल पे आया होता तो आयुषदीप के ऊपर से निकल जाती बॉल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो देखिए ये चीज़ें होंगी, लेकिन उनका जो इंटेंट है या जो पूरी जो टीम है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये न्यूजीलैंड की टीम आज जैसा खेली है, ये अपने लेवल से बहुत नीचे खेली है ये. और क्योंकि आज इंडियन टीम के हर चीज़ आपको अच्छी लग रही है. आपका जो छठा बॉलर है उसको 4 विकेट मिल रहे हैं. हमारे यहाँ तो ये होता था कि छठा बॉलर नहीं होता था, और जो 7वां बॉलर है कप्तान, जिसने आज बॉलिंग नहीं की,
तो अभी आपको लग रहा है कितने ऑप्शंस हैं हमारी टीम में, ये इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन आज खेली ही नहीं है, इसलिए आपको सब चीज़ अच्छी लग रही है। तो इस मैच की चीज़ों को थोड़ा होल्ड करके हम अगर जब कभी मौका मिला और इस सीरीज के बारे में अगर हमको देखना है, 2 मैच ही सही, लेकिन तब शायद हमको थोड़ा और आइडिया मिलेगा, क्योंकि ये मैच अब एक दूसरे कंडीशन में खेलेंगे, धूप होगी या कुछ होगा, और पूरा मैच भी मिलेगा हमको, और जिसमें कि वेदर का और टॉस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैच हो, अच्छे विकेट पे अच्छा मैच देखने को मिले, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा अटैक कैसे इतना अच्छा है, या न्यूजीलैंड की बैटिंग क्या इतनी ख़राब है जितनी आज दिखी कि आप एक 20 ओवर का मैच आप 65 रन से हार गए। इनफैक्ट it's a huge margin. Indeed, too small a sample size to get overcritical at the moment. But आप दोनों का धन्यवाद आपके विश्लेषण के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, हम वापस लौटेंगे तीसरे T20I के साथ, और ऑफ कोर्स कांटे की टक्कर हो इसकी हम उम्मीद करेंगे। अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।